बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher Munawar Shaheen, serving in teaching block 1. Students, as you know, that we have two books in our syllabus, book 1 and book 3. Book 1 contains short stories and book 3 contains two parts. Part 1 plays, part 2 poems. Today I'll start part 2 of book 3, the poems section, and the name of your first poem is The Rain, written by William Henry Davis. Dear students, before we proceed, I would like to tell you that what type of questions will appear in your annual paper from this part. As you can see on your screen, here are 4 points and the heading of this is types of questions from poems, book 3, part 2. First of all, synonyms. Second, MCQs. Third, questions answers. And fourth, explanation with reference to the context. Dear students, as you know that we go with the bilingual method during our lecture, so I'll explain you these 4 headings, these 4 points in Urdu. बेटा देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन सिनोनिम्स का है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट होगा। सिनोनिम्स में आपकी पोएम की कोई भी लाइन आपके पेपर में शामिल की जाएगी और उसमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड को, एक मुश्किल टर्म को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। और अंडरलाइन करने के बाद आपको 4 ऑप्शंस जो हैं वो दी जाएंगी और उन 4 ऑप्शंस में से एक जो ऑप्शन होगा वो अंडरलाइंड वर्ड का प्रॉपर सिनोनिम होगा। आपको उस सिनोनिम की, उस सिमिलर वर्ड की निशानदेही करके आंसर को टिक करना होगा। इसी तरह से आपका जो MCQs का क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह से शामिल किया जाएगा आपके पेपर में, और ये भी आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होगा और इसमें भी एक सेंटेंस दिया जाएगा और फॉर एग्जांपल आपको जो है वो कह दिया जाएगा या सेंटेंस दे दिया जाएगा कि हु हैज़ रिटन द पोएम रेन। तो नीचे 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें डिफरेंट पोइट्स के नेम्स होंगे कि ये पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने लिखी है, जलालुद्दीन रूमी ने लिखी है या W.H. डेविस ने लिखी है। तो आपको जो है वो जो करेक्ट आंसर है वो टिक करके या तो बबल फिल करना होगा ऑब्जेक्टिव पेपर में या फिर टिक करना होगा। ये एग्जामिनर के, पेपर सेटर के माइंड पे या पेपर सेटर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि पोएम्स के पार्ट में से वो 2 MCQs दे दे, 1 MCQs दे दे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर्स चॉइस। बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्वेश्चंस आंसर्स का, और ये आपके सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा होगा और इसमें आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो देने होंगे और अपने लेक्चर में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी बताऊंगी। ये 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे और ये 8 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन है। लास्ट में आता है आपका एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस लिखना होगा, फिर कॉन्टेक्स्ट देना होगा और फिर एक्सप्लेनेशन करनी होगी। रेफरेंस से मुराद आप जो हैं वो उर्दू में जिस तरह से हवाला मतन
देते हैं कि उसमें आप सबक का नाम लिखते हैं, मुसन्निफ का नाम या नज़म का नाम और शायर का नाम, तो इसमें भी आपको एक सेंटेंस लिखना होगा जिसमें आप नज़म का नाम यानी पोएम का नाम और पोइट का नाम लिखेंगे, जैसे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रेन, और बाकी उसके बाद कंपोज्ड बाय और रिटन बाय W.H. डेविस और विलियम हेनरी डेविस। फुल भी लिख सकते हैं, वैसे आप W.H. डेविस के तौर पर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी हेडिंग कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपको याद होगा, आप उर्दू में सियाक व सवाक लिखते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या लिखना है, इस पोएम का जो थीम है, हेडिंग कॉन्टेक्स्ट की ही रहेगी, लेकिन उसमें जो लाइंस आप लिखेंगे वो थीम की लाइंस आ सकती हैं, सेंट्रल आइडिया की लाइंस आ सकती हैं, मेन आइडिया की लाइंस आ सकती हैं। तो वो भी मैं आपको इस लेक्चर के एंड पे जो है वो थीम भी बताऊंगी जो आपने कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। रेफरेंस की हेडिंग के 2 मार्क्स हैं, कॉन्टेक्स्ट का 1 नंबर है और एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क्स हैं। एक्सप्लेनेशन में आपने सिंपल उन लाइंस की पैराफ्रेज करनी है, फिर अगर उन लाइंस में कोई इनर मीनिंग है, कोई सिंबॉलिक मीनिंग है या जो भी, वो आपने मेंशन करना है, और उसके बाद आपने पोएम की लैंग्वेज को जो डिस्कस करना है। इसके 2 मार्क्स हैं। आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 से 3 बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रेफरेंस आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, सेकेंडली आपका कॉन्टेक्स्ट ठीक होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब ठीक होंगी तो आपकी एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। 2 नंबर अगर आप रेफरेंस से लें और 1 नंबर आप कॉन्टेक्स्ट से लेते हैं, तो बाकी रह गया एक्सप्लेनेशन की हेडिंग। उसमें से जो एग्जामिनर है उसने आपको 1 नंबर तो लाजमी देना है, तो 4 मार्क्स जो हैं वो इसमें इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये तो रहा आपका जो है वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम के इस पोएम के पोर्शन में से किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो शामिल होंगे और हमें किस तरह से इस पार्ट में से अपने जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोएम का टॉपिक हमारा द रेन है और इसका जो पोएट है विलियम हेनरी डेविस। तो रेन को तो हम डिस्कस करेंगे ही सही, पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं आपको पोएट के हवाले से। चंद पॉइंट्स हैं जो कि आपके माइंड में, मैं डिटेल में नहीं गई, चंद पॉइंट्स हैं और उतनी ही ज़रूरत है आपको इस पोएम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट। विलियम हेनरी डेविस वॉज बॉर्न इन 1871 एंड डाइड इन 1940। तो मतलब विलियम हेनरी डेविस जो है वो 1871 में पैदा हुआ और 1940 में उसकी डेथ हुई है। बड़ी इवेंटफुल सी लाइफ उसने गुजारी है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी, थर्ड पॉइंट पे आप देखें कि ही फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स ड्यूरिंग हिज लाइफ, ऑल हिज हार्डशिप्स आर रिफ्लेक्टेड इन हिज पॉइंट्स। यानी उसका जो भी काम है, उसने ज़िंदगी की जितनी भी हार्डशिप्स फेस की वो सब की सब उसमें रिफ्लेक्ट करती हैं। ही स्पेंट अ वेरी लॉनली लाइफ विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन हिज वर्क। उसने एक तनहा सी ज़िंदगी गुजारी और वो तन्हाई या अकेलेपन का जिक्र भी उसके काम में जो है वो मिलता है। Dear students, we can easily find some mentioned themes in his work also, which are mentioned on your screen. The first one is observations about life's hardships one faces. Then he talks about different occurrences of nature, and then he talks about his own experiences of life. After discussing the themes of his famous work, I will go with the writing style of our poet W.H. Davis. William Henry Davis' writing style is similar to the themes he is talking about in his poems. First of all, you can see on your screen, he is using a very natural and simple language. No artificial expressions are mentioned in his poem, and he is talking about the simple joys and commonplace adventures one faces in the journey of his life. And his love for life and nature is quite obvious in his work.
Dear students, now we are going to read this poem, The Rain, and here it is. And I will also tell you the translation of these lines, and after that we will go with the theme and explanation of the lines. Your first stanza of the poem Rain, the first stanza is, I hear leaves drinking rain. I hear, मैं सुनता हूँ leaves पत्तों को, drinking rain, बारिश का पानी पीते हुए. मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूँ. I hear, मैं सुनता हूँ, rich leaves on top. Here, the rich leaves doesn't mean wealthy leaves. Here, rich leaves means abundant or a thick leaves. So I hear rich leaves on top, on the top most of the tree. कहते हैं कि मैं ऊपर वाले सरसब्ज घने पत्तों को सुनता हूँ, गिविंग देते हुए, द पुअर beneath. यहाँ द पुअर से मुराद दरख्त के नीचे जो कम घने पत्ते होते हैं वो मुराद है, beneath अंडर. वो कहता है कि मैं घने सरसब्ज पत्तों को सुनता हूँ, गिविंग द पुअर beneath, निचले कम घने पत्तों को देते हुए, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके. मतलब ये शायर कहता है कि मैं ऊपर वाले घने पत्तों को, बारिश के पानी को निचले कम घने पत्तों पर कतरा कतरा टपकाते हुए सुनता हूँ. This a sweet noise to hear. This actually is a short form or a contraction form of it is. This a sweet noise to hear. ये शोर सुनना, यानी जो बारिश का पत्तों पर गिरने का शोर है. तो कहते हैं कि ये शोर सुनना कितना ही खुशगवार और पुरकैफ है. These green leaves drinking near, और मेरे नज़दीक ये जो सरसब्ज व शादाब पत्ते ये पानी पी रहे हैं, ये सुनना कितना खुशगवार मंजर है. बच्चों, ये आपकी ट्रांसलेशन है इन लाइंस की. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ. इन नेक्स्ट स्टैंजा मैं लाइंस पढ़ूंगी. And when the sun comes out, and when और जब, the sun comes out और जब सूरज बाहर निकलेगा, जब सूरज जाहिर होगा, after this rain shall stop, यानी इस बारिश के रुक जाने के बाद जब सूरज जाहिर होगा, a wondrous light will fill, तो एक बहुत ही खुशगवार हैरत अंगेज रोशनी भर देगी. किसको भर देगी? ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तारीक गोल कतरे को. यानी जब बारिश के बाद सूरज जाहिर होगा तो हर तारीक और हर गोल कतरे को जो डर्ट से अटा हुआ था, जो स्याह था, उसको भर देगी विद अ वंडरस लाइट, एक हैरत अंगेज रोशनी से भर देगी. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज अपनी आबोताब से चमकेगा, खूब चमकेगा. इट विल बी अ लवली साइट, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा. Dear students, now I will discuss some of the difficult terms which may not be familiar to you at this stage. Dear students, you can see on your screen that there are some poems, there are some terms, difficult terms in this poem, and I am telling to explain you about these difficult terms. These would be helpful for you as far as the temptation of explanation is concerned. Rich leaves, thick leaves, fully wet leaves, then poor leaves, thin and scattered leaves. On top, at the top or at the upper level, beneath, under,
below, underneath. This actually is a contraction form of it is. I have already told you while explaining the lines of the poem. Sweet noise, melody, symphony, music, wondrous, bright, shining, beaming, gleaming, then bright, blazing, brilliant, cloudless, lovely, pleasant, charming, delightful. Here are two terms. The leaves drinking rain means rain falling on the leaves, giving us impression rain falling on the leaves, यानी वो बारिश जो पत्तों पर गिर रही है, गिविंग अस इम्प्रेशन, वो हमें ये इम्प्रेशन दे रही है एज दे आर ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि पत्ते बारिश का पानी पी रहे हों. और नेक्स्ट एक यूज ऑफ टर्म गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, तो द टॉप रिच लीव्स pass on the rainwater on to the lower poor leaves, कि जो ऊपर घने पत्ते हैं जब वो सैर होकर पानी पी लेते हैं तो उसके बाद कतरा कतरा करके कम घने निचले पत्तों पर पानी, बारिश का पानी टपकाते हैं. तो here the word poor, I have already explained this thing कि here the word poor means thin leaves, not the poor people. Dear students, now I will tell you about the theme of this poem, and you can write this theme in your heading of context, and you can you have to learn this theme by heart. Theme of the poem. In this poem, the poet depicts rain and sunshine as a great phenomenon or aspect of nature. Here he criticizes the class distinctiveness of the society where the rich enjoy the real bliss while the poor are just helpless spectators. However, the poet is optimist that after the rain, the sun will shine bright as a savior for the poor. यहाँ पर बेटा जो हमारा शायर है वो धूप को और बारिश को एक बहुत ही शानदार किस्म का जो है वो शानदार पहलू के तौर पर जो है वो पेश करता है. और एक्चुअली वो शायर मुआशरे में ये जो क्लास डिस्टिंक्शन का एलिमेंट है उसको भी तनकीद का जो है वो निशाना बना रहा है, जहाँ पे अमीर लोग बहुत सारी बरक़ात से, बहुत सारी सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और वो सोसाइटी जहाँ पे गरीब महज बेयारो मददगार तमाशाई हैं और वो इन अमीर लोगों की को रंगरलियाँ मनाते हुए जो है वो देखते हैं. ताहम हमारा जो शायर है वो फिर भी पुरुमीद है कि बारिश के बाद सूरज जो है वो निकलेगा और गरीब लोगों के लिए निजात दहिंदा के तौर पर जो है वो सामने आएगा और अपनी पूरी आबोताब से चमकेगा. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका हो गया थीम. नाउ वी आर गोइंग टू discuss the explanation of the poem, and I will start with the first stanza. But before starting the explanation of the poem Rain, I would like to tell you about the two things which you have to keep in your mind, and that this poem has two meanings. The first one is apparent meaning from the wording point of view, and the second one is underlying meaning according to the theme of the poem. So you have to keep this thing in your mind. First of all, I'll discuss with you the superficial meaning, the apparent meaning of the poem, and then I'll tell you about the underlying meaning of the poem. So, dear students, the poet says in the first stanza that he is enjoying this rain. He is enjoying the music which is created
by the falling droplets on the leaves. This music is giving him a lot of enjoyment and pleasure. The leaves on the top are drinking the water just like the human beings. You can see on your screen in a slide कि मूसलाधार बारिश हो रही है और वो मूसलाधार बारिश वो जो दरख्त के टॉप पे जो पत्ते हैं उन पर पड़ रही है और पोएम में इन्हीं टॉप के पत्तों के लिए शायर ने रिच लीव्स का जो है वो वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पर जब मूसलाधार बारिश हो रही है तो सबसे पहले जो रिच लीव्स हैं वो उनसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और उस पानी को जो है वो पी रहे हैं बिल्कुल इस तरह से जैसे कि ह्यूमन बींग्स। लेकिन नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट ही लाइंस में वो क्या कह रहा है कि देन व्हेन दे are drinking the rainwater, the topmost leaves are drinking the rainwater. After drinking them, they are giving the rest of the water to the leaves which are underneath the upper leaves. आप इस पिक में देख रहे हैं जहाँ पे एक स्लाइड में लिखा है ड्रिपिंग द रेस्ट ऑफ द रेन वाटर और नेक्स्ट में द रेन वाटर ऑन द थिन लीव्स। तो इन ये दोनों पिक्चर्स जो हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी कि किस तरह से मूसलाधार बारिश के बाद टॉप के लीव्स ने ड्रिप किया है पानी नीचे के थिन लीव्स पर। एंड दिस इज द apparent meaning of this poem, and according to the this is the apparent meaning according to the theme of the poem, and the underlying meaning of the poem is related to the two classes of society. Actually, the leaves on the top, the leaves on the top represent the richer set of society, and they have all the riches, and they have all the riches, and they enjoy all the comforts and luxuries of life, and they make themselves richer. Then after the enjoyment, they transfer those riches, luxuries, comforts to the lower set of the society. After they have their fill, they leave the rest to the poor people of the society, and both of these themes, that is the apparent theme and the symbolic theme, they are projected in this poem because our poet has both of these experiences in his life, and he had seen the good days and bad days in his life. जी तो स्टूडेंट्स, इस पोएम का जो पहला पार्ट है जो हमारा सुपरफिशियल मीनिंग कह लें या फिर हमारा अपरेंट मीनिंग है, वो तो ये कह रहा है कि शायर सिंपल सा है कि शायर जो है वो इस म्यूजिक को जो सुन रहा है, बारिश जो क्रिएट कर रही है उसे इंजॉय कर रहा है, और साथ ही वो देखता है कि रिच लीव्स जो हैं यानी टॉप मोस्ट लीव्स थिन लीव्स पर जो अंडरनीथ है उनको जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है उन पर टपका रहा है कतरा कतरा करके। लेकिन इनर मीनिंग ये कहता है कि जो हमारी जो क्रिटिसाइज कर रहा है यहाँ पर हमारे क्लास डिफरेंस को, कि जो रिच पीपल हैं सबसे पहले वो नेमतों अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय करते हैं, और फिर आगे उन अमीरों की ये जिम्मेदारी है कि उस नेमत का बराबर हिस्सा गरीबों पर तक पहुंचाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं कि फुल जब उनका पेट भर जाता है, जब वो खूब सैर हो जाते हैं उन नेमतों से, तो फिर कतरा कतरा करके यहाँ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप को अगर क्वाइन आफ्टर क्वाइन में कन्वर्ट करें, यानी वो एक एक सिक्का करके खैरात जो है वो गरीबों तक देते हैं। तो ये दो मीनिंग्स जो है वो इस फर्स्ट स्टैंजा में मौजूद है। नेक्स्ट स्टैंजा की अगर मैं बात करूं तो बेटा नेक्स्ट स्टैंजा में
हम अब नेक्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। तो जो स्टेंजा नंबर 2 है, in this stanza again there are two meanings. Definitely one is the apparent meaning according to the wording of the poem, and the next one is underlying meaning according to the theme of the poem. Now the apparent meaning is that the sunlight is going to appear after the rain, and the sun is going to make the whole scene lovely, and every dark round drop is going to be reflected as bright sunshine. When the sun comes out after the dark clouds, as you can see on your screen, that when the sun comes out after the dark clouds, everything is going to be bright and shiny. And the poet is very hopeful about this change over here. And he is talking about the cycle of nature over here also, that every darkness, there is going to be, after every darkness, there is going to be a brightness. And now I will tell you about the underlying meaning of the poem. And the underlying meaning of the poem is that like the cycle of a nature, there is a cycle in society as well. The riches are going to be transferred or are equally distributed to the poor set of society as well, just as the sun changes these dark raindrops into bright, shiny stars. Similarly, the comforts are going to be transferred to the lower set of society. As you can see on your screen, that the rich give coin after coin to the poor, and as rich leaves give drop after drop to the poor thin leaves. So here you can see the adversity is going to be banished by the equality and justice. And when the dark clouds of justice are going to be shed away, and the sun of justice is going to become out, there is going to be equality and justice, equality and just distribution of wealth, luxuries, and comforts for all the levels of the society. The poet is very hopeful and wants this change to come soon. We can connect the first stanza. Here we can connect the first stanza to the second as well. On the whole, the poem has the running theme of love of nature plus justice in society. Dear students, I hope both of these stanzas are clear to you now. Inshallah, in our next video, I'll discuss the question answers with you, and I'll explain how to attempt the question of explanation with reference to the context. You have to memorize the today's lecture, and you have to memorize the synonyms of the difficult terms, and the meaning, the apparent meaning and the inner meaning of the poem as well. With best wishes. Thank you, class. Allah Hafiz.